Good morning, all the students of class 9th. Subject today we will discuss the subject is biology. Sorry, the subject is physics. The subject is physics. And in last class we were discussing about the force, types of force or forces. And today we will discuss our next topic. Topic is that न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दैट मीन्स न्यूटन के गति के नियम्स को हम लोग पढ़ेंगे. ओके, बेसिकली वन थिंग इज वेरी इट्स नॉट गुड विच इज रिलेटेड टू योर स्पेशली स्टूडेंट्स. मतलब दे आर वॉचिंग द वीडियोज एंड डो नॉट रिस्पॉन्ड. तो प्लीज आई मीन इट्स योर ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड एंड you have to follow the command. Okay, so I hope you will understand and you will do. So we will continue with our topics. First our topic is that Newton's laws of motion. So finally we defined in our last class, actually we defined कि what is laws of motion. That means न्यूटन ने गति के नियम को डिस्क्राइब करने के लिए that means उन्होंने 3 लॉज दिए, उसी को बोलते हैं हम लोग लॉज ऑफ मोशन. तो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या है न्यूटन्स? तो वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो वी कैन सी दैट कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज दैट कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट कि एन बॉडी remain in a state of rest or of uniform motion in a straight line. That means कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करना चाहता है कि अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता है. इफ दे आर इन यूनिफॉर्म मोशन तो वो क्या रहना चाहता है कि यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है. कब तक? जब तक स्ट्रेट लाइन coupled to a change that state by applied unbalanced force. In applied unbalanced force, that means कि when a body are in state, they just tries to remain its position to state. That means वो अपना position को state मतलब that means rest में बनाए रखना चाहता है. And if the body is in uniform motion, that means they will try to remain यूनिफॉर्म मोशन. दैट मीन्स वो जो अपना यूनिफॉर्म मोशन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि अपना जो उसका जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन उसको वो बनाए रखे. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट इन अदर वर्ड्स कि इफ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर बॉडी मेरा क्या है रेस्ट में है तो इट विल रिमेन दैट मीन्स वो क्या होना चाहेगा उसी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहेगा. सो एंड इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, इफ इट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, अगर मेरा बॉडी किस में है यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड. दैट मीन्स कि बॉडी क्या करना चाहेगा सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में क्या करना चाहेगा मूव करना चाहेगा, सेम स्पीड के साथ मूव करना चाहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. दैट मीन्स कि वो तब तक उस स्पीड को मेंटेन रखना चाहेगा इन दैट सेम डायरेक्शन जब तक किसी एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट ना करे. सपोज दैट अगर हम खड़ा हैं तो हम क्या है हमारा जो पोजीशन है एट इन रेस्ट है. दैट मीन्स तो हम रेस्ट में कब तक रहना चाहेंगे जब तक हम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है. तब तक मेरा क्या होगा पोजीशन अगर रेस्ट में है तो हम रेस्ट में कंटिन्यू करना चाहेंगे. अब अगर हम मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तो क्या होगा कि जब तक हम मूव करेंगे जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स हम पे एक्ट नहीं करेगा. तो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ. दैट मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. प्लीज यू कैन राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स. Okay. And an equal and opposite force is required to continuously cancel or to balance the force of friction acting on a body. Thus the method कि after the conclusion, that means after discussing the statement we can decide that
we can decide that thus an unbalanced force thus an unbalanced force thus an unbalanced force is required to the conclusion, that means after the discussing on the first law of motion को स्टडी करने के बाद we can decide that कि thus unbalanced force is required to change speed और direction of an object. That means कि unbalanced force हमको चाहिए किस क्या करने के लिए, किसी बॉडी का डायरेक्शन को और उसका स्पीड को चेंज करने के लिए. एंड इफ दिस अनबैलेंस फोर्स इज रिमूव्ड कंप्लीटली, दैट मीन्स अगर इस अनबैलेंस फोर्स को रिमूव कर लिया जाता है कंप्लीटली, तो ऑब्वियसली बॉडी जिस पोजीशन पे है, जिस वेलोसिटी में है, उस वेलोसिटी को एक्वायर्ड करेगा. दैट मीन्स उस वेलोसिटी में रहेगा, वो क्या करेगा, उस वेलोसिटी में चलता रहेगा. द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विथ वेलोसिटी इट हैज एक्वायर्ड टिल देन. दैट मीन्स उसी वेलोसिटी के साथ वो क्या करता है, मूव करना चाहेगा और मूव करता रहेगा. क्लियर? तो दैट मीन्स किसी भी बॉडी का स्टेट को चेंज करने के लिए वी नीड अ अनबैलेंस फोर्स आफ्टर अप्लाइड ऑन द बॉडी. दैट मीन्स अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. So that means कि unbalanced force is required to change the state of the body. So we can see that. So that means कि the tendency of undisturbed object. That means the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving body with same velocity is called inertia. That means कि जो क्या है कि the tendency as a property of undisturbed object. That means जो ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में है, सपोज दैट कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, तो वो क्या कहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा. और व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे विल ट्राई टू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दैट मीन्स दैट इज द प्रॉपर्टी. दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट्स का, वो जो दैट मीन्स अपने में होने वाले चेंजेस का जो विरोध कर रहा है. दैट मीन्स उसमें जो चेंजेस होना चाह रहा है उसमें जो अगेंस्ट है, वो उसमें का जो अगेंस्ट है, अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है नहीं, तो उसका एक नेचर है, वो इस नेचर के साथ रहना चाहता है. और वो क्या कर रहा है कि जो एक्सटर्नल सोर्स है उसका अगर वो विरोध कर रहा है, दैट मीन्स उसके अगेंस्ट है, तो उस जो नेचर है ऑब्जेक्ट का, वो जो नेचर है, दैट मीन्स जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में रहने वाला जो नेचर है ऑब्जेक्ट्स का, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया. तो इनर्शिया क्या बोलते हैं, इनर्शिया. द वर्ड इज इनर्शिया. तो इनर्शिया क्या है, एक टेंडेंसी, एक नेचर है, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. जितना भी ऑब्जेक्ट्स है इस यूनिवर्स में, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी बॉडीज है, उसका एक अपना नेचर है. उसी नेचर को हम लोग बोलते हैं क्या, इनर्शिया. इनर्शिया दैट मीन्स कि वो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन को मेंटेन रखना चाहेगा और किसी एक्सटर्नल फोर्स का वो अपोज करना चाहेगा. दैट इज द नेचर. दिस नेचर इज नोन एज inertia. तो on the basis of this judgment we can say that कि first law of motion is also known as law of inertia. That means कि therefore कि Newton's first law of motion is also known as law of inertia. तो first law of motion is equal to what? Law of inertia. Both are the same things. तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मास सपोज दैट कि अ बॉडी हैविंग लाइट वेट लेस इनर्शिया, अ बॉडी हैविंग हैवी वेट, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इनर्शिया. तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. और इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी. इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी. Inertia is that property of body due to which it resist का मतलब resist बोलो या फिर oppose बोलो या फिर assist बोलो. A change in its state. Change in its state of rest or uniform motion.
uniform motion. That means you can see that कि inertia is the property. Actually I told you inertia what? Inertia is the tendency or property, TENDENCY, tendency और property that means उसका गुण है, property that means उसका एक अपना nature, अपना behavior, अपना गुण है. तो inertia is that property, body का जो nature है property है, due to which it resist का मतलब होता है that means just opposing a change in its state, that means उसका पोजीशन का वो क्या कर रहा है, उसका जो पोजीशन है that means जिस कंडीशन पे है उसमें चेंजेस का वो क्या करता है, विरोध करता है. that means change its state, that means just trying to oppose the change, just trying to oppose the change of its state. तो state that means अगर वो रेस्ट है तो रेस्ट में रहने चाहेगा, उसका अपोज करेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन का वो अपोज करेगा. ओके, तो दैट इज द थिंग. दैट मीन्स इनर्शिया को आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. दैट मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया. तो लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द सेम थिंग. अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट डाउन द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो यू कैन राइट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अगर पूछेगा कि राइट डाउन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यू कैन राइट द लॉ ऑफ इनर्शिया. बोथ हैज सेम थिंग्स. That means there is no difference. There is no difference. That means तो इससे क्या होता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमको फोर्स का क्या मिलता है, डिफिनेशन मिलता है. दैट मीन्स कि आफ्टर स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, नहीं, इट गिव्स अस द डिफिनेशन ऑफ फोर्स. दैट मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. दैट मीन्स कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन gives us a definition of definition. That means Newton's first law of motion gives us a definition of force, force, force. That means फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है वो हमें क्या देता है, फोर्स का डिफिनेशन देता है. दैट मीन्स कि फोर्स इज द एक्सटर्नल फैक्टर जिसके थ्रू क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो है उसमें चेंजेस होती है, चाहे चेंज ऑफ द पोजीशन, चेंज ऑफ द शेप एंड साइज, चेंज ऑफ द डायरेक्शन. दैट मीन्स आफ्टर द डिस्कशन वी कैन डिसाइड दैट कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस the definition of force. So that means force is the external factor which is applies on a body or just tries to change the direction of the body, state of the body, and the velocity of the body or speed of the body. That is the first thing. A force is something. So we can define the force, definition of force. So that means after that conclusion we can define what is the actual definition of force. So we can write कि a force is something. A force is something which changes. That means a force is something which changes or tends to change the state of rest or uniform motion or state of rest or of uniform motion of a body, uniform motion of a body. That means कि after the discussion, after the long discussion, we can just define that कि force is a something which changes और tends to changes, मतलब चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है. दैट मीन्स इट्स चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस. टेंस टू चेंज मतलब दैट मीन्स ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी.
तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ डेस, तो यू कैन राइट फोर्स का डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो दैट मीन्स अब देखो क्या है कि ऑब्वियसली क्या है कि जब किसी बॉडी को हम लोग पुश करते हैं या पुल करते हैं, दैट मीन्स कि व्हेन वी आर जस्ट पुशिंग और पुलिंग अ बॉडी, पुलिंग अ बॉडी, दैट मीन्स वी जस्ट ट्राई टू व्हाट, we just try to overcome the inertia of the inertia, we just try to overcome the inertia of the body force. That means some important point is that कि first law of motion, that means first law of motion, that means Newton first law of motion is also, that means Newton first law of motion, that means Newton first law of motion is also sometimes called Newton first law of motion is also sometimes called Galileo's law of inertia. Galileo law of inertia, Galileo law of inertia, I-N-E-R-T-I-A, Galileo law of inertia. That means Newton's first law of motion is sometimes also called Galileo laws of inertia. So what is the reason behind this? We will explain all these things in our next class. That means कि अब हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हाउ वी कैन डिफाइन, एंड व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, हाउ वी कैन राइट कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, दैट मीन्स हाउ वी कैन डिफाइन अ फोर्स, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। दैट मीन्स, और हमने ये भी पढ़ा कि हैवियर बॉडी इज ग्रेटर इनर्शिया और लाइट बॉडी इज लेस इनर्शिया। दैट मीन्स कि द इनर्शिया जो है, दैट मीन्स इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया। क्या है इनर्शिया? दैट मीन्स ये क्या है, ये एक बार प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स बॉडी अगर हेवी रहेगा तो ज़्यादा इनर्शिया, अगर बॉडी लाइट रहेगा तो कम इनर्शिया। तो मास क्या है, मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया क्या करता है, वो डिपेंड्स करता है मास पे। वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे। अगर मास कम रहेगा तो ऑब्वियसली इनर्शिया कम होगा, अगर मास ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा रहेगा। दिस कैन वी कैन मीन दैट इफ अ बॉडी इज मेजर और इट्स इनर्शिया, अगर हम किसी बॉडी का इनर्शिया को मेजर करेंगे तो इट इज डिफिकल्ट टू पुश अ हेवी बॉक्स देन पुश अ लाइट बॉक्स। दैट मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू पुश हेवी बॉक्स देन to push a light box. Similarly, it is easier to stop moving ball with our hand than to stop a moving bicycle. Thus, heavier object has greater inertia. That means कि आप सपोज करो क्या है कि एक क्रिकेट का जो बॉल है, it's easy to stop the motion of the balls. That means उस बॉल का मोशन को रोकने के लिए we can easily stop after applying the force. That means after pushing the hand in front of the गेंद। बस इन केस ऑफ बाईसाइकिल उसको हम लोग रोक नहीं सकते बाय द हैंड। तो दैट मीन्स बिकॉज द बाईसाइकिल हैज ग्रेटर इनर्शिया एंड अ बॉल इज लेस इनर्शिया। तो दैट मीन्स इनर्शिया फोर्स किस पे डिपेंड कर देगा? मास ऑफ द बॉडी। तो दैट मीन्स हेवी मास हेवी इनर्शिया, लाइट मास लाइट इनर्शिया। तो एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड काइंड्स ऑफ इनर्शिया वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। एंड please write down all the notes from the blackboard. That is the important things. Okay, that is the point. That is the point. It will come in your exams. Okay, in that time you don't blame, sir, give me notes and some other things. So please write down the notes and please hear my voice carefully and do your job. Thank you for watching this video and have a nice day.